जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आमर शॉट MCQ सीरीज आम लेके आगे आगुरी गोटे आम क्लास करते जो 25 क्वेश्चन डिस्कस करते आज आपणकर जब आम देखा सेकेंड क्लास ये भी आज आम 25 क्वेश्चन डिस्कस करवा जोटा आम एग्जाम बहुत रिलेवेंट आ जोटा कि मोस्ट प्रोबेबली आमको लगुच एग्जाम आसीपे तो ताको आम डिस्कस करिए। तो ये सेशन समस्त बहुत हेल्पफुल रही फ्रेंड्स। आज जो ग्रुप गोटे शेयर कर दिखाँ आ आशा करी आज देखिए 25 रु को पिलाने पूरा 25 रु 25 आंसर ठीक कर। ओके रेडी स्टार्ट करिया। चलते प्रथम प्रश्न आप आगे रहा कि कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा। तो एवियन इन्फ्लुएंजार आम कैरेक्टरिस्टिक्स विषय डिस्कस करिया। फर्स्ट हाई मोर्टालिटी रेट इन ह्यूमान्स जब आम देखा ह्यूमान्स भितर एवियन इन्फ्लुएंजा द्वारा अधिक मृत्युहार देखा मिलूँ मृत्यु घटुची। वाइड स्प्रेड एफिशिएंट ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो देखा ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बहुत इफेक्टिव रोचे। देन प्रिडोमिनेंटली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स इन्फेक्शन इन मोस्ट ह्यूमन केसेस अधिकांश ह्यूमन केसेस देखिले आपन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो फ्रेंड्स ये भीतर को स्टेटमेंट गुड़ा करेक्ट है ओनली 1 and 2 ओनली 1 and 3 ओनली ना 1 2 and 3 जल्दी आंसर कर दियंतु। एवरीवन नीड टू आंसर फ्रेंड्स। कौन आसो करेक्ट आंसर शुड बी कहतु वाइड स्प्रेड एफिशिएंट ह्यूमन टू ह्यूमन जदि आम देखिए ट्रांसमिशन नु ये देखिले आप एवियन इन्फ्लुएंजा तो जो भी आपंकर कौन हो आपंकर पक्षी मानव डायरेक्ट मनुष्य को ट्रांसफर हुए ह्यूमन टू ह्यूमन रेयर केस देखा जाए आपंकर कौन है ना ट्रांसफर हुआ। तो ओबियसली आम दुईटा गोटे एलिमिनेट करेंगे दुईटा एलिमिनेट कले आम करेक्ट आंसर कौन हो नंबर 1 and 3 सी शुड बी करेक्ट आंसर। सी शुड बी करेक्ट आंसर। दो एवियन इन्फ्लुएंजा इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए हाई मोर्टालिटी रेट इन ह्यूमन्स ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन रिमेन्स रेयर नहीं ये ह्यूमन टू ह्यूमन बहुत रेयर केस हेंस स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट है देखिए। Also in most human cases the infection predominantly target the respiratory tract thereby making statement 3 is correct। तो करेक्ट आंसर कौन हो फ्रेंड्स सी शुड बी करेक्ट आंसर। देन आम जा आपनकर सेकंड क्वेश्चन इंडियन लेजिस्लेचर बिकेम बाइकैमरल थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। इंडियन लेजिस्लेचर बिकेम बाइकैमरल थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द मोल्लेमिटो रिफॉर्म मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। जल्दी आंसर कर दें समस्ते। एवरीवन नीड टू आंसर। एवरीवन नीड टू आंसर फ्रेंड्स। इंडियन लेजिस्लेचर बिकेम बाइकैमरल। चबिता शिबू प्रीतम हाँ नमस्ते नमस्ते। कौन आसो करेक्ट आंसर शुड बी तो आप करेक्ट आंसर जो कौन नाम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म नहीं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 made the Indian legislature bicameral. The act introduced bicameralism and direct election for the first time in India। दुईटा हाउस हो आप जो टू हाउस सिस्टम जो देखिए ये स्टार्ट हो लेजिस्लेटिव असेंबली देखिले आपनकर द लोअर हाउस विथ 145 मेंबर्स सर्विंग 3 year टर्म। देन काउंसिल ऑफ स्टेट जोटा आसो द अपर हाउस विथ 60 मेंबर्स सर्विंग 5 year टर्म ना बाइकैमरलिज्म देखिए मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहबा 1919 रे इंट्रोड्यूस होची। तो आगो जब थर्ड क्वेश्चन इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन ए स्टेट वुड बी प्रॉपर अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो फ्रेंड्स ए भीतर को कंडीशन रे गोटे स्टेट रे प्रेसिडेंट रूल लागू करबा सठिक हो। इन केस ऑफ हंग असेंबली आफ्टर जनरल इलेक्शन इलेक्शन पर जदि हंग असेंबली रहिला कौन भी पार्टी आपन कौन ना मेजोरिटी शो करि पन्नी बनया पई आपनकर गवर्नमेंट where a ministry resigns and no other party is able to form ministry commanding majority मिनिस्ट्री रिजाइन करुच्ची आ कौन पार्टी
मेजोरिटी शो कर पारनी आपनकर गवर्नमेंट बनया पे ताला माल एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट ड्यू टू एलिगेशन ऑफ करप्शन तो मंत्री मान विरोध रे जहाँ विरोध हो आप करप्शन है तो माल एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे ठीक रे कौन शासन सुचारू रूपे चली पारुन ताला आम करवा करप्शन जो तो अंडर आर्टिकल 365 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रो 365तम जो आर्टिकल ता अनुसार हमर तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोर्स गिवन बिलो माने को कंडीशन आम प्रेसिडेंट रूल लागू करि परिया जल्दी आंसर कर दें समस्ते कौन करिया आंसर एटा आम थर्ड क्वेश्चन एवरीवन नीड टू आंसर सब कर देबा ऑल ऑफ दिस 356 365 गुड C1 2 and 4 तो आप कहते तीन टाक काटिदेव ना नहीं माल एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट ड्यू टू एलेक्शन ऑफ करप्शन सत कथा करप्शन नहीं देखले एमती को मंत्रिमंडल ना जो करप्शन ना बोली ना नहीं समस्ते करप्टेड हाँ देखिले प्राय आप मुख्यमंत्री आरंभ करके जदि आम हिसाब से देखिए तो जेको स्टेट आराम से लगे दी पार ना नहीं करप्शन आप तो तेणु आपको आम एलिमिनेट करदे 3 के एलिमिनेट करदे तो ओबियसली आप कौन आसो ना ये आम 1 2 and 4 शुड बी करेक्ट आंसर ओके आर्टिकल 356 365 EACS हाँ देखिए ओके गुड तो आम करेक्ट आंसर कौन पड़े ना 1 2 and 4 शुड बी करेक्ट आंसर वेरी गुड ब्यूटीफुल आंसर दिया सबुटा प्रेसिडेंट रूल्स according to article 356 president rule can be imposed on any state of India on the grounds of failure of the constitutional machinery ne अपन दुईटा रही है आर्टिकल 365 को एज पर दिस आर्टिकल प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज इफ एनी स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विथ द डायरेक्शन ऑफ गिवन बाय द यूनियन ऑन मैटर्स इट इज एम्पावर्ड टू ना यूनियन रो डायरेक्शन को यदि मानबनी ताहले भी आपन हो परिबो यूनियन को जो पावर मिलची ता अनुसार यूनियन जो डायरेक्शन दब स्टेट को यदि से मानबनी ताहले भी आपन प्रेसिडेंट रूल लागि परिबो आर्टिकल 365 कहूँ आर्टिकल 356 कहूँ कौन ना फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेशिनरी हेले आपनकर प्रेसिडेंट रूल लागि परिबो राष्ट्रपति शासन लागू हो ना नहीं देन आउर भी देखिले आपन कोन पळे ए सर्कमस्टेंस द लेजिस्लेचर इज नॉट एबल टू इलेक्ट ए लीडर एज चीफ मिनिस्टर फॉर ए टाइम प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नर ब्रेकडाउन ऑफ ए कोalition इन द स्टेट गवर्नमेंट दैट लीड्स टू सीएम हैविंग माइनॉरिटी सपोर्ट ताली हबो ए नो कॉन्फिडेंस वोट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली लीडिंग टू ए लॉस ऑफ मेजॉरिटी postponement of election owing to unavoidable reasons such as natural disasters epidemic war तो आर्टिकल 365 तो हम देखिले प्रणाम प्रणाम नमस्ते कन हो हां गुड तो हम देखिले तो हमर माल एडमिनिस्ट्रेशन हो ना सब बुढ़ा हो ना सब केस हम लगे पारे तो चतुर्थ प्रश्न फ्रेंड्स रिसेंटली व्हिच कंट्री हैज मेड वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग टोकामाक डिवाइस HH70 हां टोकामाक डिवाइस HH70 वर्ल्ड फर्स्ट हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर टोकामाक डिवाइस HH70 वर्ल्ड फर्स्ट है जल्दी आंसर कर दें फ्रेंड्स एवरीवन नीड टू आंसर ये सक्सेसफुल होला पर देखिए आकाश रे दुईटा सूर्य देखा छै गोटे सूर्य अछि और अलग अलग सब सूर्य देखिबे है ना और तो महाभारत रे हम सब सुनि छन पुराण रे सब नना सेकंड सूर्य सब बने दउथिला आपनकर एबी चली छी कौन आसो करेक्ट आंसर रशिया पक्का खतरनाक ये कर दियो चिन चाइना नहीं ता कंट्री वायरसेस है आपनकर चाइना ये सब खतरनाक काम करियो है दिल चाइना चाइना हैज अनवेल्ड HH70 the world's first fully high temperature superconducting tokamak device in Shanghai developed by energy
singularity, energy singularity. HA70 achieved fast plasma utilizing innovative pre-ionization method. With innovative pre-ionization method, को method है innovative pre-ionization method रे से already fast plasma achieve करी माने सोन रे जो nuclear fusion reaction चालू छी हला देखिले माने देखिबा से माने ये कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन को बनौछन है आपन with a toroidal magnetic field of 0.6 Tesla and a major radius of 0.75 meters. It features 26 high temperature superconducting magnets. HS70 marks China's leadership in high temperature superconducting magnetic confinement fusion, setting milestone as the first commercial superconducting tokamak worldwide. Energy singularity plans to advance with HH170, aiming for significant energy gain by 2030, cementing China's pioneering role in fusion energy technology. ना ये देले आपण आउ गोटे सूर्य आपण आकाश देखिबा ना सूर्यंकर जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन सन भीतर चले हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिसी आपण हीलियम बने न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन सेति पई प्रोजेक्ट चली जदि सक्सेसफुल हुए तो गोटे इतला 2 मिनिट भीतर कोर कोलैप्स करियला 1.5 मिलियन डिग्री सेल्सियस रीच कला किंतु रहलेनी देखिबा जदि ये सक्सेसफुल है कनेक्टिंग हुए ताला हम आकाश रे आ गोटे सूर्य देखिबा नुवा सूर्य आ गोटे आपण मिले देन 50 क्वेश्चन आपनकर 5 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स विथ रेफरेंस टू BIMSTEC कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन दिस सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू बीइंग इन 1997 थ्रू द ढाका डिक्लेरेशन BIMSTEC includes only South Asian countries as its member. Select the incorrect options from the quotes given below. तो फ्रेंड्स ये भीतर कोड़ा इनकरेक्ट जल्दी आंसर करते हैं समझते एवरीवन नीड टू आंसर फ्रेंड्स जल्दी आंसर कर दें फ्रेंड्स तो करेक्ट आंसर शुड बी फ्रेंड्स आपनकर कोन बोले छो ना आपनकर एटे बोथ 1 and 2 हां देखले आपन नानी बोथ 1 and 2 काई बोथ 1 and 2 हला का से बचे इनकरेक्ट ऑप्शन कोडा आपनकर नानी कोन बचे सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन एमदे देखले आपन जे देखिबा कोन होई छी ना आपनकर बोथ इनकरेक्ट नानी सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू बीइंग इन 1997 थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन इट इज नॉट declaration of Dhaka declaration, it is a Bangkok declaration. Okay, then BIMSTEC includes the countries from both South Asia and Southeast Asia. तो South Asia आज South East Asia तो ओनली ऑप्शन रही तो ऑब्वियसली हम अरब से आपको कौन ना एलिमिनेट कर देगा स्पेसिफिकली बांग्लादेश भूटान इंडिया म्यांमार नेपाल श्रीलंका एंड थाईलैंड नहीं ये सब कंट्री रहे फॉर दिस रीजन हम सी है जो बोथ आर इनकरेक्ट से 50 इनकरेक्ट ऑप्शन कोड इनकरेक्ट तो बोथ आर इनकरेक्ट है यस नो है गुड चल करेक्ट पचार थिला हम कहिथन नेदर 1 नॉट 2 हम तो क्वेश्चन सबल तण करी क्वेश्चन पढिबे तापरे तळे कोन करेक्ट ना इनकरेक्ट पचार ताको चेक करिया बहुत जरूरी तो फ्रेंड जो चैनल सब्सक्राइब कर दिन बेल आइकन देबा जमर भूलियन ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपन प्रथम पहुंचबो ता सहित ये हमर रही छी कि टेलीग्राम चैनल जो जॉइन करना स्कैन कर जॉइन कर जंतु एथिरा आपन पीडीएफ पाई जेबे ये नंबर रही छी किछि भी ओसीएस रिलेटेड क्वेरी रहला आपन निश्चित रूप कॉल करना प्रतिष्ठा बैच कंप्लीट विथ फाउंडेशन बैच आपन प्रीलिम टू इंटरव्यू पर्यंत आप गाइडेंस मिल जिवो प्रीलिम रो देखिले आपन 400 मार्क जनरल स्टडीज पेपर 1 200 मार्क पेपर 2 200 मार्क 400 मार्क पढ़ा जिवो मेंस पई आपन जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 रहला 1000 मार्क ऐसे पेपर आपन 250 मार्क गाइड करे जिवो
देन आपनकर कंपलसरी पेपर भी ओडिया इंग्लिश भी कवर अप कर दिया जीवा इंटरव्यू ग्रूमिंग सेक्शन आम दौर मन रखिए किंतु आप ऑप्शनलटा आप एक्स्ट्रा पढ़िया पड़ो अदरवाइज आपनकर ओसीएस प्रिपरेशन प्रिलिम टू इंटरव्यू पर्यंत कंप्लीट गाइडेंस आपन मिल जाए। ये बैच रिसेंट स्टार्ट हुई तेणु जो जॉइन कर जल्दी जॉइन कर तो कोड मन रखिए Y595 निश्चय व्यवहार करी ये आपनकर 12,030 टका अराउंड आपन आसीबो। देन आम जो जीवा फ्रेंड्स आपनकर संग्राम बैच रही ओसीएस क्रैश कोर्स बैच जोटा कोर कॉन्सेप्ट सहित क्वेश्चन आंसर डिस्कस करा जिवो जार एग्जाम की मोस्ट प्रोबेबली आपन सेप्टेम्बर लास्ट कि आपन अक्टोबर ही पारे तेणु जो मैंने चाहते एनरोल करें ये बहुत हेल्पफुल रहा कहीं आम प्रिलिम पेपर 1 पेपर 2 बोथ आप कवर अप करूँ ये आप ओपीएससी प्रीवियस ईयर बुकटा रही बहुत हेल्पफुल समस्त तो जेको कोर्स हो बुक किणुंट Y595 कोड निश्चय व्यवहार करेंगे। तो बर्तमान जी फ्रेंड्स आम 6th क्वेश्चन की आपंकर विथ रेफरेंस टू द बाकू क्लाइमेट यूनिटी पैक्ट अनवेल्ड एट COP29 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द पैक्ट प्लेज्ड $300 billion annually by 2035 to fund climate resilience initiative specifically in developed countries. Second, success of the pact critically depends on the deployment of artificial intelligence aligned with the local needs in the global south. The pact was criticized for risking digital colonialism by relying heavily on Western designed AI system. Which of the statements given above is are correct friends? 1 only, 2 and 3 only, 2 only, now 1, 2 and 3. Baku Climate Unity Pact, Conference of Party 29. The pact pledged $300 billion annually by 2035 to fund climate resilience initiative specifically in developed countries. Developed countries ପାଇଁ पैसा दिया जिवो कि टेस्ट सीरीज अच्छी हाँ ओसीएस रो टेस्ट सीरीज अच्छी ओसीएस रो टेस्ट सीरीज टा देखिए नबु 2400 टका पळे आसीबो होला देखले टेस्ट सीरीज न नहीं प्राइम टेस्ट नहीं जा 300 टका रही जो से भीतर ओसीएस रो टेस्ट सीरीज पाई जो होला ओनली टेस्ट ओसीएस टेस्ट सीरीज न हो से पळे आसे 2400 टका से प्राइम टेस्ट नहीं जा प्राइम टेस्ट 300 केतना आसीबो होला टेस्ट प्राइम जो अछि टेस्ट प्राइम भीतर एटा आसीबो ओसीएस रो होला ओसीएस मार दो से भीतर खोजले ओडिसा रे तर ओसीएस पळे आसीबो ए टेस्ट सीरीज टा पळे आसीबो तो कौन आसीबो एटा कोन ना कोडे हमु ठीक लागुची डेवलप्ड कंट्री मानन को $300 बिलियन दिया जो कोन ना कोड सीटा हमको गड़बड़ लागुची नहीं गरीब देश मान देबा ना धनी देश मान पूरा जोड़ा उन्नत मान देश मान देबा कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट कहीं बाकू पैक्ट टारगेटेड क्लाइमेट रेजिलियंस फंडिंग फॉर ग्लोबल साउथ होला ग्लोबल साउथ ने गरीब देखिए नॉट डेवलप्ड कंट्रीज है तेनु आउ नले ये 2 या 3 बहुत गुडा आपन ठीक रही छे ना। देन फ्रेंड दिबा कंसीडर लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दुटा लिस्ट आपन रही छे गोटे पर लिस्ट तो आपन रही सब नदी मानकर सब पुराना ना गुड़ा रही ना पौराणिक ना वैदिक नेम गुड़ा रही आ गोटे पर सब नदी गुड़ा ना रही तो व्हिच ऑफ द अबव आर करेक्टली मैच चूज द आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो ए भितर फ्रेंड्स कोडा सठिक रे माने मैच होउची आपनकर सतलुज चेनाब रवि ब्यास और झेलम ए मानक सब पौराणिक नाम गुड़ा सब दिया हिचला देखले वैदिक नेम गुड़ा दिखाई दिया हिची देखो कोडा कोडा सब आपन ठीक हो जल्दी आंसर कर देन एवरीवन नीड टू आंसर मिशंतु हैं हम ज्योग्राफी पढ़ाई आपको सब क्लासेस रे पढ़ाऊँ कौन आसो करेक्ट आंसर टू बी सतुदी सतलुज को ना को ठीक लागुची ना सतु को सतु अच्छी हमर हां देखा ये ठीक अच्छी
बियास बियास को विपाशा कहबा ना चेना होबनी। हां देखिले ये भूल अछि आपन देखो ये भूल अच्छे आम मन ये ठीक अच्छी शतुद्री आम काढ़ा मैच करने कौच ना मैच कौच तो भूल कौटा अच्छी देख हाँ देख विपाशा चेना होनी बियास को आम विपाशा कह दुईटा आप काटिपारे एलिमिनेट करें है ना दुईटा एलिमिनेट करें दुईटा एलिमिनेट कले आप 1 3 5 हो पारे देन आउ देखो आ कौन अच्छे पूरा 1 3 5 हो पारे एक तो आमको ठीक लगुच ना एकटा ये अच्छी ना नहीं ठीक ये तो एक ना ये सी मार था ना कौन भूल अच्छी कौड़ा आप लगुच परशुणी रवि रवि सार जड़े पुरुष लोक ठीक अच्छे यहाँ परशुणी ठीक अच्छे देन आप अक्सिनी अक्सिनी बियास तो विपाशा कह ये भूल अच्छे वितस्त झेलम ठीक है देन करेक्ट आंसर शुड बी योर सी है सी शुड बी योर करेक्ट आंसर सी शुड बी योर करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ठीक अच्छे सी शुड बी योर करेक्ट आंसर। तो आगू बढ़िया इन द लाइट ऑफ इंडिया's agricultural policies consider the following statements. PM Kisan scheme was launched to support tenant farmers exclusively. Second, minimum support price MSP is fixed annually for 23 agricultural crops based on CHAPEA's recommendations. The Digital Agriculture Mission aims to create a robust digital ecosystem for farmers. How many of the above statement are correct though friends? ए भितर केते statement correct अछि? Only one, only two, all three na none? Digital agricultural policies. जल्दी आंसर कर दें फ्रेंड्स everyone need to answer. Thank you for liking and sharing this session friends. जो मैंने शेयर करना शेयर कर दिया। कौन है वो बी ओनली टू टिनेल फार्मर हो नहीं कि जार जमी थी ना हाँ जमी थी तो दुईटा करवा ठीक अच्छे PM किसान प्राइमरी सपोर्ट्स लैंड होल्डिंग फार्मर्स नहीं नॉट द टिनेल फार्मर्स देन आउ दुईटा आप ठीक अच्छे ये एक्चुअली जो 23टा एग्रीकल्चर क्रॉप रही ये 22टा आप रही कौन रही ना मैंडेटेड क्रॉप्स 22टा रही आउ गोटे रही फेयर एंड रेम्यूनरेटरी प्राइस फॉर FRP टा आप सुगर केन है ना सुगर केन आप FRP दि जाए फेयर एंड रेम्यूनरेटरी प्राइस है ना जोटा मिनिमम सपोर्ट प्राइस कोटा 22टा दि जाए आप है ना आ टोटाली ओके रसगोल्ला दिवस अच्छे तो हापी रसगोल्ला दिवस समस्त को है नियंत रसगोल्ला आपणकर आम खाइबे ना पिला खाइबे पिला खाइ तुम खाइदे सब है देखिले आमर कौन पूरा बंगला थे झगड़ा लगी आम GI टैग आनी ना रसगोल्ला ठीक अच्छे हाँ ठीक अच्छे हौ नियो तुम रसगोल्ला रसगोल्ला दिवस पालन करदेली भल रसगोल्ला स्मूथ स्मूथ अच्छे कौन आन विकलांग बुद्धि कि पहाड़ा आम के जाने हाँ व्हिच कमिटी रेकमेंड द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपन कौन है नाम हिल्टन यंग कमिटी ना गुड गुड द हिल्टन यंग कमिशन रेकमेंड द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. This commission was set up in 1926 and was also known as the Royal Commission on Indian Currency and Finance. Na? Royal Commission on Indian Currency and Finance. Good. ये टाइप नुआ टर्मिनोलॉजी टिके मन रखुथिले देखिले एना OPSC आ UPSC देखिबा हां दिल्ली बा रोनालिन टमाटो मु खाइ दिस टिके होला देखिले तो भाभी दियो खाइले बोल टिके ना नहीं ऑनलाइन रे
ओके गुड ये रसगुल्ला नहीं एटा कौन सी खाई दियो एटा कौन बाहला खाई दियो सब ए रसगुल्ला टाइप न था कौन करिया मिलुन रसगुल्ला हाँ ऑनलाइन रसगुल्ला पठेदेली सब खाई दे समस्त हाँ देखिले चलो गुड तो ये कौन पढ़ाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज प्रपोज्ड टू बी एडेड बाय द 129th constitutional amendment bill to facilitate simultaneous elections कोटा से जल्दी आंसर कर दियो ये जे हमर केते आर्टिकल 82A आर्टिकल 82A हां ठीक अछि हौ आ रसगुल्ला नाई केकटा खाई दियो कोन करिया जा अछि आ मिललानी ऑनलाइन रसगुल्ला अवेलेबल नै सरीरानी सब आज रसगुल्ला दियो सब खाई दिसंदी आ जमा मिलुनी मत सब अलग लाभ कौन कौन मिलू सब खाली पानी जिन गुड़ा मिलूँ बेसी आगु बढ़िया consider the following statements about the civil disobedience movement तो फ्रेंड्स civil disobedience movement बा आईन अमान्य आंदोलन विषय विचार करवा जोटा 1930 रे आपण होची इट वाज लॉन्च्ड विथ द दांडी मार्च ना दांडी मार्च सहित ये आपण लॉन्च होची The movement was withdrawn after the Gandhi Pact. Gandhi Pact पर एटाको हमें withdrawn करछंदी. All major leaders of Congress were arrested before the launch. तो launch पूर्व सब जो कांग्रेस लीडर उड़ा थिले समस्त को अरेस्ट कर हेछि. Which of the above statement is correct? तो फ्रेंड्स ए भीतर को बाकी बा विवृत्ति गुडा को सठिक रही छि. डॉक्टर बाबू वेरी गुड आफ्टरनून. ओके नो प्रॉब्लम. जल्दी आंसर कर देन समझते. The correct answer should be friends is 1 and 2 only. Correct answer should be 1 and 2 only. Correct answer should be 1 and 2 only. Good. तो ये कौन है ना आपण बिफोर लॉन्च नहीं आफ्टर लॉन्च चीज है थो ना स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट अरेस्ट टुक प्लेस आफ्टर द लॉन्च ऑफ द मूवमेंट मूवमेंट लॉन्च हला परे आपनकर अरेस्ट स्टार्ट है नॉट द बिफोर द लॉन्च देन फ्रेंड्स 12th क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स ना फंडामेंटल राइट और लीगल राइट्स संदर्भ में हमें ये वाक्य गुडा को विचार करिबा बोथ लीगल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन then fundamental rights cannot be amended whereas legal rights can be amended. Which of the statements given above is correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 not 2. Correct पचार कोटा correct. सठिक कोटा अछि. जल्दी आंसर कर दें रोहित बाबू. वेरी गुड आफ्टरनून. नमस्ते. आज क्रैश कोर्स बेच नथिलो फेर आपसे देखि दबो रिकॉर्डेड है ना रोहित जल्दी आंसर कर दे समझते कौन पड़े आछो 1 ओनली बोथ लीगल राइट एंड फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे हमर कोन रखिया फंडामेंटल राइट उडा प्रोटेक्ट रखिबा ना नहीं प्रोटेक्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन देखले कौन पड़े आछो ना हमर प्रोटेक्शन का जोगबा ना जनरली आपन फंडामेंटल राइट उडा देखले फंडामेंटल राइट्स cannot be amended whereas legal rights can be amended जदि हम देखिया कंप्लेंशन ना आपनकर इथे फंडामेंटल राइट भी amended हेछि ना नहीं the compilation neither 1 not 2 neither 1 not 2 fundamental rights are the basic rights that citizens of a country are entitled to. These rights are provided by the constitution of the country. In India as of today we are entitled to 6 fundamental rights. The parliament can amend the fundamental rights also as long as the amendment does not go against the basic principle of Indian democracy. माने basic structure जदि हम देखिबा हां हो ठीक अछि गुड बेसिक स्ट्रक्चर को
एपट सेपट न करिकी आमे फंडामेंटल राइट की भी आमे अमेंडेड करूछन ना नहीं। तेणु उभय देखिले आपण भूल हे गेला कोडा भी ठीक न। 13th question, the 128th Constitutional Amendment Act 2023 is also known as 128तम जो आपण Constitutional Amendment Act रही ताको आमे कोन कहबा, राइट टू एजुकेशन अमेंडमेंट, वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट, डिजिटल इंडिया अमेंडमेंट ना कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट बोली कहबा। जल्दी आंसर कर दियो फ्रेंड्स, एवरीवन नीड टू आंसर। कोन आछो करेक्ट आंसर शुड बी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। करेक्ट आंसर कंप्लीशन वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट है, वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट है ना। दिस अमेंडमेंट reserves 1/3 of the seats in the Lok Sabha and the state legislative assemblies for women, aiming to enhance female representation in Indian politics नहीं। तो आपण इट इज नोन वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट मन रखिए कोटे 120th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 बहुत न्यूज से टाइम थिला नहीं आपनकर। तो व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नासास चापिया मिशन है, CHAPEA चापिया मिशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज रे आपन नासा रो चापिया मिशन रहउची। ये चापिया मिशन रो जदि हम देखिया ऑब्जेक्टिव कोन, टू टेस्ट न्यू मार्स रोबोट डिजाइन्स, to simulate year-long stays on the surface of Mars, to develop new space suites, to test solar panel efficiency on Mars। जल्दी आंसर कर दे समझते। नारी शक्ति हाँ बंधन अभियान एक्ट, ओके गुड। जल्दी आंसर कर दे फ्रेंड समझते। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर शुड बी फ्रेंड्स कंप्लीशन टू सिमुलेट year long stays on the surface of Mars ना। तो बी शुड बी करेक्ट आंसर मन रखिए। द नासा चापिया प्रोजेक्ट ये बहुत इंपोर्टेंट आपण मन पे, कारण नासा प्रोजेक्ट इसरो प्रोजेक्ट आप आपण क्वेश्चन आसुची ऑलरेडी एग्जाम रे। सिमुलेट year long Mars missions to assess the food system and human health after a year in the 1700 square foot Mars Dune alpha habitat बनाई छी गोटे at the Johnson Space Center। a crew emerged है ना। चापिया missions involve 4 crew members living in a 3D printed structure that mimics a realistic Mars habitat है ना। मार्स जो टाइप habitat से टाइप गोटे कंप्यूटर माने 3D प्रिंटिंग करिकी से रहिछन समस्ते। द डाटा कलेक्टेड विल एड फ्यूचर स्पेस मिशंस फोकसिंग ऑन फिजिकल एंड बिहेवियरल हेल्थ पैटर्न्स। तो फिजिकल कंडीशन बिहेवियरल कंडीशन केमत रहउची है ना, तापरे रिसर्च चलची आपण हां देखिले हम जे लॉन्ग टर्म रहिबा ताले कोन हबो। इवन ए चार जण जेनाली आपण चापिया प्रोजेक्ट पार्ट हां चार जण साइंटिस्ट एमान रहउचंदी आप टेस्ट कराउची हां देखिले। देन फ्रेंड्स आगु जिबा हमें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू चीफ विजिलेंस कमिशन आपनकर CVC रिलेटेड रहिछि। इट इज ए बॉडी consisting of a central vigilant commissioner and not more than 2 vigilant commissioners। Second, the members hold office for a term of 4 years। Third, the members are appointed by the prime ministers। Which of the statement given above is correct? ना ये भीतर को स्टेटमेंट करेक्ट करेक्ट पचासी। जल्दी आंसर कर दें समझते, एवरीवन नीड टू आंसर।
ओके गुड बहुत बढ़िया ये आप देखिए अपॉइंटमेंट किए ना नॉट प्राइम मिनिस्टर बट प्रेसिडेंट yes obviously correct answer 1 and 2 only should be your correct answer friends 1 and 2 only should be your correct answer एटा आपनकर प्रेसिडेंट है नॉट द प्राइम मिनिस्टर तार एक्सप्लेनेशन रही तो फ्रेंड जो चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ बेल आइकन देवा जमार भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जहाँ भी आसो आप प्रथम पहुँचो ये फ्रेंड्स आम रही टेलीग्राम चैनल जो जॉइन करें स्कान कर जॉइन कर ये नंबर रखिथे किसी भी ओसीएस रिलेटेड क्वेरी हो निश्चित रूप कॉल करने आम गोटे प्रतिष्ठा बैच नहीं आसू जोटा कि आप पूरा प्रिलिम टू इंटरव्यू पर्यटन कंप्लीट गाइडेंस मिले जोटी आपंकर प्रिलिम एग्जाम 400 मार्क पढ़ा आपको मेन्स आपंकर जनरल स्टडीज पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 एसे रईटिंग ये 1250 मार्क होगा देन आप कंपलसरी पेपर 500 मार्क पढ़ा आ इंटरव्यू 250 मार्क आपंकर ग्रूमिंग सेशन गाइडेंस आप प्रोवाइड कर दिया तेणु प्रिलिम टू इंटरव्यू कंप्लीटली रही कोर्स आपको ऑप्शनल केवल एक्सट्रा पढ़ा पड़ो भल मन रखी था तेणु जदि कोड व्यवहार कर Y595 ये कोर्स आप 12,030 टकर पाइबे जोटि आप 800 घंटार अधिक क्लास आवर पाइबे तो कंप्लीट फाउंडेशन बेच रही बहुत हेल्पफुल रहा जो मैंने कि जेनराली 2026 जुलाई जो एग्जाम हो फिल्म ताको देवे जो मैंने देवा चाहते आप जो सेप्टेम्बर कि अक्टोबर एग्जाम हो जाए आप ये बेच नहीं पारे ये आप गोटे क्रैश कोर्स बेच रही प्रिलिम एग्जाम क्रैक करने ये बहुत हेल्पफुल हम आपको प्राइस बहुत कम भी रही किसी क्लासेस हो बहुत सारा क्लासेस बाकी अच्छी आप देखिए ये जनरल स्टडीज पेपर 1 पेपर 2 बहुत पढ़ा है जो चाहते जॉइनिंग करेंगे ये रही प्रीवियस बुकटा ओसीएस गत 10 वर्ष क्वेश्चन को आम चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेशन कर डिटेल सॉल्यूशन सहित सहित 10टा प्रैक्टिस पेपर भी देचु जहाँकि आप गोटे ये जो सेप्टेम्बर अक्टोबर एग्जाम हो जाए बहुत हेल्पफुल रहा फ्रेंड्स जो सेसन लाइक करना लाइक कर दिखाँ आगे शेयर कर दे जो ग्रुप अच्छा ताकि आप सांग भी बेनिफिटेड हो पारे तो 16 नंबर प्रश्न कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट तो फ्रेंड्स आम भारत छाड़ आंदोलन संदर्भ में जहाँकि 1942 होता संदर्भ में विवृत्ति वाक्य गुड़ा विचार करेंगे फास्ट रही इट वाज लॉन्च आफ्टर द फेल्योर ऑफ क्रिप्स मिशन फेल्योर होला पर हम लॉन्च कले द मूवमेंट वाज स्ट्रिक्टली नॉन वायलेंट थ्रू आउट तो देखिए आम ये पूरा अहिंसा आंदोलन थिला कौन प्रकार हिंसा घटना घटी ये देन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बेन्ड आफ्टर द लॉन्च ऑफ द मूवमेंट तो व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज योर करेक्ट करेक्ट कोडा पचार जल्दी आंसर कर दें समस्त एवरीवन नीड टू आंसर भारत छाड़ो आंदोलन नहीं देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट डू और डाई देखिए कोड ना कोड नॉन वायलेंट पूरा थ्रू आउट द नॉन वायलेंट नॉट पॉसिबल नहीं ये भूल हो कोड ना कोड नहीं अलरेडी देखिए आपंकर पड़े आसो कौन ना करेक्ट आंसर हो जो देखिए 1 and 3 should be correct answer 1 and 3 should be correct answer okay the movement was strictly non violent activity भी रही आप देखिए गांधी जी डाई कले डू और डाई और अन्य कथा छाड़ा देखिए while the leadership promoted non-violence spontaneous violent uprising occur in many parts of the country then the Vallabhi University was set up by which ruler को रूलर Vallabhi University आपनकर एस्टाब्लिशमेंट करथिले कुमारगुप्त 1 देन आपनकर भट्टारक धर्मपाल गोपाल जल्दी आंसर कर दे समझते हाँ हाँ हो हम भूल गोटे हम कि असुविधा नहीं प्रैक्टिस कर जल्दी आंसर करूँ फ्रेंड्स कौन पढ़े करेक्ट आंसर शुड बी भट्टारक हाँ ये गुजरात आप यूनिवर्सिटी नहीं सेटा भाई भट्टारक गुजरात हाँ आप then which organization recently released the report titled the impact of climate change on education the impact of climate change on education को इंस्टीट्यूट रिलीज कर वर्ल्ड बैंक यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ना यूनेस्को
जल्दी आंसर कर दें फ्रेंड्स। UNEP, the impact of climate change on education. वर्ल्ड बैंक आसो लगू तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है आज जो क्लाइमेट चेंज कथा मोर होइछि किंतु एटा मन रखिथि वर्ल्ड बैंक हम त कोन आसो ना करेक्ट आंसर द वर्ल्ड बैंक। द वर्ल्ड बैंक्स रिपोर्ट the impact of climate change on education highlights how climate change intensifies extreme weather, disrupting schooling and causing learning losses and dropouts. Despite its significance, education remains overlooked in climate policy, with less than 1.3% of climate assistance allocated to it in 2020. ये पढ़ा पड़ो ये जो रिपोर्ट गुड़ा देखुव रिपोर्ट गुड़ा आसो वर्ल्ड बैंक है IMF है ये रिपोर्ट गुड़ा आप एग्जाम आसे देखिए। तो 19th क्वेश्चन जब देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। देखो सिविल सर्विस माने यू हैव टू नो एवरीथिंग अंडर द सन किंतु किछटा जिंस रही आम कौन कर अच्छी ना आमर जानी अच्छे न्यूज गुड़ा जोड़ा रहा न्यूज रे जो भी रोचे आर्टिकल्स फॉलो करिया रेगुलर करंट अफेयर पार्ट रे तो हम किसी असुविधा नहीं आराम से जी मन रुचि पढ़ ता सहित करंट अफेयर सहित अपडेट रोथे बोले देखिए जहाँ भी न्यूज रही हाँ आर्टिकल्स रही भल देखते। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखिए आम पश्चिमी झड़र कैरेक्टरिस्टिक फीचर विषय पचार दे ओरिजिनेट इन द मेडिटेरियन मेडिटेरियन सी रीजन ओरिजिनेट करती। दे ब्रिंग विंटर रेनफॉल टू द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। They primarily affect the monsoonal rainfall. Which of the statement given above is are correct? If the co statement are friends correct, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, now 1, 2 and 3. तो जल्दी आंसर कर देना समझते everyone need to answer. कौन आशु भारी 1 and 2 only नहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखिले आपनकर ये आसे कोड ना विंटर सीजन ना मानसून जेनरली हम सेतलो सरी जाय रिटायर्ड मानसून भी पड़े जाय ये आपनकर जदि हम देखिबा साउथ ईस्ट मानसून जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर मास रे अनसेट हुए अक्टोबर नवेम्बर मास दिखे रिट्रीट मानसून आसे तापर आपन सी आसीबो डिसेंबर जनवरी फेब्रुआरी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ना तेणु आपन जे देखिबा आमे ओके ओके गुड। तो ये कौन पड़े आसो तेणु 1 and 2 आसो तो ये देखिले हमर आको आमे काटि देबा देखिले Western disturbance originate in the Mediterranean region and brings winter rainfall to the northwestern India. They don't primarily affect the monsoonal rainfall. Then aguji friends hame consider the following statements about the Indian Ocean dipole IOD Indian Ocean dipole संदर्भ रे हमें এই বাক্য গুড়া বিচার করিবে। Positive IOD leads to good monsoon in India. Negative IOD is associated with the drought conditions in India. IOD influences the southwest monsoon. Which of the statements given above are correct? तो फ्रेंड्स ए भितर को स्टेटमेंट आपन करेक्ट अछि
तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हम कौन हो देखिए आम पॉजिटिव आईओडी इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव आईओडी फेज लीड टू गुड मॉनसून इन इंडिया डी 1 2 and 3 सब ठीक है नेगेटिव आईओडी इज एसोसिएटेड विथ ड्राउट कंडीशन इन इंडिया आईओडी इन्फ्लुएंस द साउथ वेस्ट मॉनसून तो ऑब्वियसली सब ठीक रहेगा वेरी गुड तो ऑल आर करेक्ट है ना ऑल आर करेक्ट इंडियन ओशन डाइपोल जो आम देखा ये कौन हो जाए ना आपंकर ये आपंकर ईस्ट इंडियन ओशन वेस्ट इंडियन ओशन ना देखिए तो पॉजिटिव फेज रे कौन हो ना आपंकर ईस्ट इंडियन ओशन हाई प्रेशर रही लो प्रेशर तो हाई प्रेशर लो प्रेशर रही विंड एपटे फ्लो कर आम तो क्या चाहूँ विंड आप एपटे आसू ना नहीं आपंकर नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया विंड एपटे जाओ एपटे ये विंड गुड़ा ही आप कौन ना आप ये क्रॉस कर कौन ना इक्वेटर क्रॉस कले साउथ वेस्ट मॉनसून विंड ही आसो तो पॉजिटिव फेज जी वर्षा है अधिक वर्षा हम तो ये ठीक पॉजिटिव हेल्प कर देखिले ठीक अच्छे ओके ओके बहुत बढ़िया ठीक अच्छे तो देख देन आम देखिए नेगेटिव रे कौन उल्टा हो एपटे हाई प्रेशर एपटे लो प्रेशर हो विंड मूवमेंट करनी माने मॉनसून डिले हो ड्राउट कंडीशन आम ऑब्वियसली आसो हाँ देखिए आउ जेहेतु ये मॉनसून विंड की इन्फ्लुएंस करे ना नहीं ये साउथ वेस्ट मॉनसून इन्फ्लुएंस करे पॉजिटिव फेज रे या इन्फ्लुएंस कर तो ऑब्वियसली आमर तीन निजे ठीक आसो देन आम जी 21 नंबर प्रश्न आपंकर कि व्हिच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज्ड द रिपोर्ट टाइटल द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स मैंग्रोव 2024 द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स मैंग्रोव 2024 ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस आईयूसीएन यूएनडीपी ना यूएनईपी तो दिले आंसर कर दें समझते हाँ देख से स्पेसिफिक वार्ड तो बाछी देले हाँ देख स्पेसिफिक वार्ड को बाछी चिन्हदेले तो कम हो कौन आसो ये करेक्ट आंसर फ्रेंड देखिए आम पाइबा हाँ कौन ये भी ना अच्छी ना ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस यस एब्सोल्युटली करेक्ट सी कहीं सी माल बाबा ये तो ना अच्छी टोटाली हाँ देखिए समझ आम एग्जाम भी कन्फ्यूजन ही मारदेवा जो जान ना काले यूएनईपी यूएनडीपी देखिए तो ये आप ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स मैंग्रोव 2024 रिपोर्ट बाय द ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस हाइलाइट्स दैट द साउथ ईस्ट एशिया होल्ड्स नियरली 1/3 ऑफ ग्लोबल मैंग्रोव है नहीं कारण 33% रही 1/3 तीन भाग भागे with Indonesia having 21%. Half of the world's mangrove are threatened, including those in Lakshadweep and Tamil Nadu, जो भी mangrove है threatened. The key drivers of mangrove loss are climate change, industrial shrimp aquaculture in Andhra Pradesh, West Bengal, Gujarat, and conversion to oil palm plantations and rice cultivations. तो मेरे फ्रेंड्स आप ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस शुड बी करेक्ट आंसर चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन IBRD एंड IDA इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट देखा आम देखा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ये बोथ संदर्भ में जब विचार करिए फ्रेंड्स इंडिया यूज IDA फंड्स ऑन सोशल सेक्टर सेकेंड इंडिया यूज IBRD फंड्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट IBRD लोन इज चीपर देन IDA IBRD लोन गुड़ाक आप सस्ता रहा अपेक्षा ना आमर IDA लोन अपेक्षा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो लोन रही व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट तो फ्रेंड्स ए भितर को वाक्य गुड़ा सठिक जल्दी आंसर कर दें समस्त एवरीवन नीड टू आंसर
वेरी गुड तो करेक्ट आंसर कौन पड़े ना आम देखिले 1 and 2 ओनली ना चेन टा आपन भूल हो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ये सब कौन ना गरीब देश मान सब दिए किसी फ्री लोन दिए कि बहुत कम पैसा आप लोन दिए ये सोशल सेक्टर डेवलपमेंट दब जनरल आईटीए फॉर द सोशल डेवलपमेंट प्रॉपर्टी एलिवेशन ये सब लोन दिए आईबीआईटी ये लॉन्ग टर्म आपनकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रोड फोड है कंस्ट्रक्शन ये दिए देखिए आपनकर क्या गोटे मन रखी थे देखिए आईडीए सस्ता रहा लोन आज कंपेयर टू आईबीआईटी देन जी आम आप 23 नंबर प्रश्न द रूट्स ऑफ ए प्लांट always grows downward while the shoots usually grow upward and away from the earth. It is known as आपको हमें कौन कहिबा the roots of a plant always grows downward while the shoots usually grow upward and away from the earth. It is known as आपको कौन कहिबा हमें जियोट्रोपिज्म ना आपको हम कौन कहबा ना जियोट्रोपिज्म ना तो जियोट्रोपिज्म refers to the upward and downward growth of the shoots and roots in response to the earth's gravitational pull. Hydrotrophism is a plant's growth response in which the direction of growth is determined by a stimulus or gradient in water concentration. Chemotrophism is defined as the growth of organism navigated by the chemical stimulus from outside of the organism. तेणु करेक्ट आंसर फ्रेंड्स पड़े छोटे जियोट्रोपिज्म आपको मन रखी था है ना जियोट्रोपिज्म शुड बी करेक्ट आंसर जोटी आपनकर गोटे मंजी है चिराटा एपटे जाए एपटे सुटा ऊपर बाहर ना देखिले देन 24 नंबर प्रश्न विथ ए रेफरेंस टू द इंफॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फर्स्टली इट वाज फॉर्म इन 1885 बाय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम. The first session was presided over by Dadabhai Naroji. It aimed at securing more Indians in civil services. Which of the statements is correct? तो फ्रेंड्स ये भीतर को स्टेटमेंट आपन सठिक रही इंडियन नेशनल कांग्रेस संदर्भ में हम विचार करिया जल्दी आंसर कर दियंतु 2025 15 25 140 वर्ष ना हेबाउ जाउछ आपन देखिले 140th 140 वर्ष हो एटा 1 and 2 ओनली इट इज फॉर्म इन 1885 बाय एलन ऑक्टेवियन हमको सर एटा ए ओ ह्यूम तो एटा ठीक अछि फर्स्ट सेशन इज पीरियड बाय दादाभाई नरोजी पक्का उमेश चंद्र बनर्जी ओके गुड बढ़िया तो काटो उमेश चंद्र बनर्जी काटो 2 2 2 भी हबो करेक्ट पचार ना 1 and 3 ओनली नहीं 1 and 3 ओनली ओके बेसी जिन छोड़ा हमने मन रखिया पड़ियो है ना देखिले नहीं फर्स्ट सेशन रो प्रेसिडेंट हम नाडा न मन रखिया हो कि बारंबार सार माने भी घुसो थिबे जोटे आपनकर हिस्ट्री रे उमेश चंद्र बनर्जी तो फ्रेंड्स आगु जी आबे 25 नंबर प्रश्न आपनकर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रो जनरल मीनिंग कोन लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अवेलेबल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स इज लो जल्दी आंसर कर दे समझते डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कौन आसो बहुत बढ़िया फ्रेंड्स वेरी गुड द करेक्ट आंसर शुड बी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो है नी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो आसो आपन देखिले disguised unemployment refers to a situation where more people are employed than actually needed, especially in sectors like agriculture. Even if some workers are removed, output remains unchanged, indicating that marginal productivity is zero. नहीं आपन आसो काम न कले भी चलता है देखिले खाली नाम को मात्र काम करिया जाउछन देखिले तो करेक्ट आंसर शुड बी सी आसो फ्रेंड्स तो आज पे एथि क्वेश्चन थिला आई होप कि these are helpful to all of you friends जो माने टे आडा चैनल को जॉइन कर सब्सक्राइब कर दियंतु ये हम टेलीग्राम चैनल रही छी आको जॉइन कर देथिरा अपन पीडीएफ पाइ जे प्रतिष्ठा बैच रही छी
24 जुलाई स्टार्ट हो जाऊँगी ये पूरा आप प्रिलिम्स मेन्स इंटरव्यू कंप्लीट गाइडेंस रही 12,000 टଙ୍କା आसो अराउंड जब वाईफाई 95 कोड बाहर कर जो मैंने चाहते नापी जल्दी जॉइन कर जातु क्या लिमिटेड सीट से आम नौ तो ये देखिए आप संग्राम बैच हो ये आपंकर क्राश कोर्स बैच है तो आपंकर ये प्रिलिम स्पेशली पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ आम कवर अप करूँ ये है प्रीवियस ईयर बुक रही तो आज क्वेश्चन है पेरिटो मोरेनो ग्लासियर दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन व्हिच कंट्री को कंट्री रे ग्लासियर थिला निश्चय रूप कमेंट सेक्शन समस्त आंसर करू आ जे कोन कोर्स किनुचंती आपण आडा आप माध्यम गले प्रोसेस फॉलो करी वेबसाइट माध्यम फ्रेंड्स ए प्रोसेस फॉलो करी थैंक यू ऑल फ्रेंड्स लाइक शेयर आ कमेंट करियो जम्मार भूलिबेनी थैंक यू नमस्ते।